ହେଉଛି ଏକ ଅପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତି। ମାଟିଏ କେବଳ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ ତା ନୁହେଁ, ମାଟିଏ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ, ଅନେକ ବଳିଦାନ ଓ ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱାର ସହ ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସମାଜର କିଛି ଅଜ୍ଞାନତା ପାଇଁ ଏକ ସଫଳ ମାତୃତ୍ୱ ଗଢ଼ି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାର ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ତାର ବିକଳ୍ପ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରଶ୍ମିରେଖା ନାୟକ, ଗାଇନୋକୋଲୋଜିଷ୍ଟ। मैडम नमस्कार। नमस्कार। प्रज्ञा स्क्वायर्स को आपको स्वागत। थैंक यू। आज टॉपिक रही व्हाट इज टीनेज प्रेगनेंसी एंड लेट एज प्रेगनेंसी। तो आरंभ करबा टीनेज प्रेगनेंसी पर। मैडम टीनेज प्रेगनेंसी कहले हमें कोन बुझुछे? टीनेज प्रेगनेंसी जहाँ को कि हमें एडोलेसेंस प्रेगनेंसी भी कहूचे, ता माने कौन कि गोटे प्रेगनेंसी जो गोटा पुबर्टी माने फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल रो 19 ईयर पर्यंत ये एज पीरियड रे यदि के प्रेगनेंस होची ताहा को हमें टीनेज प्रेगनेंसी कहूचे। तो टीनेज प्रेगनेंसी कॉज ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी देखो तो एक्चुअली टीनेज प्रेगनेंसी इन यूएस रे टीनेज प्रेगनेंसी रो इंसिडेंस हला ऑलमोस्ट 25 to 30%। 25 to 30% रो आउट ऑफ दैट 25 to 30% 78% आर अनमैरिड, बट इंडिया रे तार इंसिडेंस हला 18 to 20%, जो थ्रू की ऑलमोस्ट 15 to 20% आर मैरिड है। तो कॉजेस कौन कि मोस्ट कॉमन कॉजेस आर ऑब्वियसली अर्ली मैरिज, बहुत जल्दी बाहागर सब कर दौरान सेटा कौन पाई होची, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज दैट आमे कॉन्ट्रासेप्शन भी यूज करि परबा। आउ देन वायलेंस एज इन डोमेस्टिक वायलेंस या तो सोशल एब्यूज। तापरे कौन होची कि बहुत पिला माने गाँ भितरे रही जाउछथि, सोशल आइसोलेशन, जानि पारनाती बाहर रो कौन केमती कौन चलची। आउ पुणी हैला कि लैक ऑफ हेल्थ केयर हैला, ये सब जोगुरु टीनेज प्रेगनेंसी ता बहुत कॉमन हे जाइछि आजिकली। तो टीनेज प्रेगनेंसी रो रिस्क फैक्टर कौन होची? This factor as in say as we have to educate the family, we like education is the main factor. So education is the most common cause for the teenage family. Lack of literacy, lack of girl empowerment, lack of social health care, सब रहउचे। आ जदि टीनेज प्रेगनेंसी रो केमती प्रिवेंशन करि परिबा? टीनेज प्रेगनेंसी का प्रिवेंशन करिया को फर्स्ट वी हैव टू एजुकेट द सोसाइटी, वी हैव टू एजुकेट द गर्ल, वी हैव टू एनश्योर दैट गर्ल कि ए गोटे आमे गोटे प्रेगनेंसी की गोटे सेफली केमती एंड करिया कथा, प्रेगनेंसी की सेफली केमती कंटिन्यू करिया कथा, सेटा आमे एनश्योर करिया कथा कि ओके गोटे प्रेगनेंसी जदि होउची सेटा आमे complete pregnancy whole 9 months will take care of you, will take care of the mother, will take care of the child। तो सेटा गोटे हला। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज वी हैव टू एम्पावर द गर्ल एम्पावरमेंट हैज टू बी टेकन अप। हाउ गर्ल एम्पावरमेंट को हमें केमती नबा? ऑब्वियसली वी हैव टू इंक्रीज द लिटरेसी ऑफ द गर्ल। कहते गोटे माँ जदि लिटरेट थाए ऑब्वियसली होल ऑफ द फैमिली इज गोइंग टू बी लिटरेट। तो सेटा हम गोटे करिया। थर्डली वी हैव टू teach them about the contraception, we have to aware them about the contraception कि एटा यूज होउची। बहुत लोग जानी नहांती कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्ट्रासेप्शन फ्री रे दउची, बहुत लोग जानी नहांती ता विषय रे। तो हमको सोसाइटी की ता विषय रे जानियार अछि। देन वी हैव टू लाइक avoid the abstinence, like we have to teach them about the sex work, like sexual health, we have to teach them about the hygiene, we have to teach them about the sexual transmitted diseases, infection। ये सब तांको अवेयर करिया कथा कि ये सब सोसाइटी रे अछि, we have to be aware of that। तो नॉर्मली मैरिज तो एज केते रो केते भितर रहिले हमें टीनेज मैरिज को अवॉइड कर सकना को आइडियल एज ऑफ टीनेज? एक्चुअली आइडियल एज इज 20 to 26। मैरिज रा आइडियल इट शुड नॉट बी, एटलीस्ट इट शुड नॉट बी बिफोर 19 ईयर ऑफ एज। जदि जरा टीनेज प्रेगनेंसी रहउचंती तो नॉर्मली प्रेगनेंसी अपेक्षा टीनेज प्रेगनेंसी रो एक्स्ट्रा केयर कोन रखबो?
एक्चुअली टीनेज प्रेगनेंसी रे कॉम्प्लिकेशंस बेसी अच्छी कॉम्प्लिकेशन एज इन मैटरनल कॉम्प्लिकेशन मतलब माँ को कॉम्प्लिकेशन और बच्चा को कॉम्प्लिकेशन मींस मदर को भी बहुत कॉम्प्लिकेशन अच्छे और फिटस को भी बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है मदर को कौन कॉम्प्लिकेशन होता पारे मदर को हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होता पारे या तो साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन होता पारे तो हेल्थ कॉम्प्लिकेशन रे फर्स्ट इज एबॉर्शन टीनेज प्रेगनेंसी रे मोर चांसेस ऑफ एबॉर्शन इज देयर सेकंड इज anemia because teenagers they don't have that much of blood so ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବେବି କି ବି ବ୍ଲଡ୍ ସପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି ତ there will be lack of blood ତ anemia hoy malnutrition hoy there will be more of obstetric complication like eclampsia preterm labor ତାପରେ diabetes तापरे देयर विल बी मोर डिलीवरी टाइम रे भी तांको बहुत कॉम्प्लिकेशंस हुए जेमति कि बहुत ब्लड लॉस हो जाए पीपीएच तापरे तांको ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन हुए नी एटले लॉस ऑफ लैक्टेशन तापरे तांकर इन्फेक्शन चांसेस बहुत बढ़ी जाए परप्यूरल इन्फेक्शन को हुआ में तापरे तापरे सइला परे भी जो पोस्टपार्टम पीरियड टा भी दैट विल बी मोर डिफिकल्ट लाइक स्ट्रेस डिप्रेशंस तापरे तांको they will be very young बहुत young थांती गोटे बेबी रो टेक केयर करिया को तो ते पेरेंटिंग स्किल आसी न थाई तो they will have definitely poor parenting skill तो से जिनसटा बेबी को हैम्पर करे बेबी को केमती हैम्पर करे कि they will miss the immunization they will not be taking care of the baby रो एते ध्यान रखि परिबेनी तो ये सब जिनसटा बेबी की अगेन मेंटली हैम्पर करिबा मे बी दैट बेबी विल अगेन गो फॉर द टीनेज प्रेगनेंसी तो ये साइकिल विशेष साइकिल टा पुन थरे एमती चलथबो तो बेसिकली हमें भाविबा कि टीनेज प्रेगनेंसी रे प्रेगनेंसी पय हमको सेक्स एजुकेशन हो हमको लैक ऑफ एजुकेशन पय ए सब इशू होला that's the thing and the education means definitely who is going to give the education school our health workers asha workers anganwadi workers they are the most first primary people to educate the society कहीं ना से जानी चाहिए सब जिनसा तो एबे आसी हमें लेट प्रेगनेंसी कहले कोन बुझिबा केते बयस रो अधिक कहले हम तक लेट प्रेगनेंसी कहबा late pregnancy means actually definition हिसाब रे late pregnancy is more than 35 years but nowadays जेमते हमर लाइफस्टाइल हे गेलै सेडेंटरी लाइफस्टाइल हे गेलै तो late pregnancy complication can started after 30 years only तो 30 to 35 years or after 35 years that is late pregnancy 30 to 35 year is mid late pregnancy and more than 35 year is elderly pregnancy बेसी लेट हे जाउची सेटा जदि जने तार भी समान कॉज बोधे रहबो मैडम की लेट प्रेगनेंसी भी मोस्टली समान कॉज रहइबा किंतु लेट एज प्रेगनेंसी रे कोन हुए कि एग्र क्वालिटी एंड क्वांटिटी भलो रुहेनी काहे कि ना गोटे एज थाई प्रॉपर एज परे गोटे 30 35 इयर्स परे वुमेन रो एग बहुत पूरा डिप्लीट होबा स्टार्ट हे जाय डिस्ट्रॉय होबा स्टार्ट हे जाय तो एग्र क्वांटिटी क्वालिटी विल नॉट बी गुड तो सेही जुगुरु देयर इज मोर चांसेस ऑफ कंजेनाइटल एनोमलीज मींस बेबी जो थाई से भलो रुहेनी फॉर एग्जांपल बहुत सारा सिंड्रोम आसी जाय डाउन सिंड्रोम क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट टर्नर सिंड्रोम तो बहुत एही जिंसटा बहुत आसी जाय late pregnancy से गोटे एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशन आसी जाए और देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ डायबिटीज एंड मोर चांसेस ऑफ कार्डियक डिजीजेस ये सब जिनसटा मोर रे और फिर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी बेसी आसी जाए एग्जांपल फाइब्रॉइड सिस्ट ये सब जिनसटा टिके लेट प्रेगनेंसी रे बेसी थाए तो जब जने लेट प्रेगनेंसी हो जंती तो तांको केंती हमें प्रेग्नेंट करबा तांको किछि कॉम्प्लिकेशंस रो डेफिनेटली लेट प्रेगनेंसी होउची काई कि एक तो लेट प्रेगनेंसी होउची कोन पय ना कि आजिकली people wants to give priority to their career they wants to read more they wants to study more and they wants to learn more तो एमती हे जाउची कि they don't get time for their own personal life तो they are searching for good partner that takes time तो एमती हे जाउची और प्लस कोन होउची कि they are in dilemma whether to get pregnant or not whether there is family support or not सब देखि कि से प्रेगनेंसी टा लेट हे जाउ जे से जिनसटा को प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग दरकार हुए कि ओके वर्क इज इंपोर्टेंट एंड हैंड इन हैंड दिस शुड बी गो ऑन तो एटा दरकार है काउंसलिंग इज मस्ट हम पई चाकरी और पाठ जति इंपोर्टेंट पाठ अधिक हम जति हेल्दी लाइफस्टाइल बन जा पई पर्सनली मैरिज अर्ली प्रेगनेंसी तो जदि किसी किसी लेट प्रेगनेंसी देखे पाए मिले कि डायबिटिक हुए हाइपरटेंशन हुए इवन बेबी एम्प्टी हो जाए तो से केस गुडा को केमती हैंडल कर परबा केमती प्रिवेंट कर परबा जदि से सॉल्यूशन होची
से है प्री कनसेप्शनल काउंसलिंग दरकार प्री कनसेप्शनली आमको से जिनटा को ट्रीट करने को हम फॉर एग्जांपल जदि गोटे मदर डायबिटिक अच्छी आगुरु से मदर को से डायबिटिक की कंट्रोल करने को हम से टाइम पीरियड रे से कंट्रोल कर साइला परे से जाइकी गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन पाखक जाइकरी से प्रॉपर चेकअप करंतु कि ओके नाउ सब कुछ कंट्रोल रे अछि तापरे से ट्राई करंतु कंसीव हवा पाई एई जिनसटा जो भी प्रॉब्लम अच्छे फॉर एग्जांपल कार्डियक प्रॉब्लम अच्छे तो सी कंसीव करिया आगुरु से जिनसटा को ट्रीट करिकी तापरे जाइकरी कंसीव करंतु तो लेट प्रेगनेंसी और नॉर्मल प्रेगनेंसी तो डिफरेंट कौन रहइबो डिफरेंट केयर केमति रहइबो डिफरेंट केयर लेट प्रेगनेंसी एई जुगुरु रहइबो ना काहे कि ना एक तो द लेट प्रेगनेंसी इफ at a point there will be more complications जो आपण कहले जेमति डायबिटीज हाइपरटेंशन ये सब लेट प्रेगनेंसी रे मोर कॉमन हुए और लेट प्रेगनेंसी रे मेंटल स्ट्रेस ता बहुत बेसी थाए काहे कि ना आउ सेकेंडली कोन हो कि हालांकि आजकल बहुत सारा स्कैनिंग अल्ट्रासोनोग्राफी और वो टेक्नोलॉजी इज वेरी हाई नाउअडेज तो वी कैन आइडेंटिफाई कौन गोटे कंजेनाइटल एनोमली अच्छी डेफिनेटली वी कैन आइडेंटिफाई बट एट दैट एज गोइंग फॉर एनी एबॉर्शन और गोइंग फॉर एनी एमटीपी दैट विल हैम्पर मैटरनल हेल्थ अ लॉट तो से जिनसटा को अवॉइड करिया को डेफिनेटली सम वी शुड गेट प्रेग्नेंट एट द प्रॉपर टाइम प्रेगनेंसी शुड बी एट टाइम नॉट इट्स नॉट बी टू अर्ली इट्स नॉट बी टू लेट तो जदि मैडम जेमति कि डायबिटिक ट्रैक मदर देखा जाती लेट प्रेगनेंसी तो बेबी को केते परसेंट चांसेस है कि बेबी डायबिटिक हेबो या नहीं तो यदि डायबिटिक मदर अच्छी यदि सिंगल मदर और फादर जे भी तीन जन को भितर जड़े यदि डायबिटिक अच्छा देन देयर इज 20% चांस दैट बेबी मे डेवलप डायबिटीज इन हर फ्यूचर in his future but यदि both parent are diabetic there is 40% chance that their child may have diabetes in future तो अच्छी chances एमती नहीं कि नहीं really but that should be treated that should be recognized ताकू आगो जानी करी ट्रीट करी करी तापरे फर्दर आगो को बढ़िया कथा दैट शुड नॉट बी इग्नोर्ड किछि मदर मन को देखा जाय कि ड्यूरिंग तांकर कंसेप्ट टाइम रे ही ताको स्टार्ट हुए हाइपरटेंशन या डायबिटिक जहां भी कॉम्प्लिकेशन तो सेटा हमें भाबीबा कि आफ्टर डिलीवरी सेटा क्लियर हे जिवो या कंटिन्यू देखन तो प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज अ इंसुलिन रेजिस्टेंस कंडीशन तो से कौन हुए कि ऑलरेडी शुगर लेवल टिके बढ़ी की थाए तो बहुत लोगों को बहुत गर्ल्स को हुए कि डायबिटीज हुए प्रेगनेंसी रे बट डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू रिजॉल्व आफ्टर डिलीवरी तो सेति पई किछि नाही बट दैट प्रेगनेंसी टाइम पीरियड रे ताको कंट्रोल रखियार अछि तो थैंक यू सो मच मैडम थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम नमस्कार